Hello everyone, welcome to Level Up IES. Now today this is our fourth session of number system in which we are going to discuss further PYQs related to properties of numbers and certain questions which are not basically in any niche of a topic, but at the same time they use the properties of numbers, okay, like properties of even and odd numbers and so on. So we will complete number system topic today, and before that, what I will do is I will tell you one very simple basic concept of it. Now, again, this is a very important concept, very simple concept, and it has been asked in recent years, right? So recently, UPSC has been asking at least 2 questions every year based on this concept. And to predict, we can say that, predicting using the patterns, that this year also, this will be one of the most important concepts. At the same time, it is also very easy to understand. So why not? Why should we leave it, right? So the concept is even odd relation. Now, what we have to understand is, if you have an even number and an odd number, then if you are adding it, subtracting it, basically doing arithmetic operations using even number and odd number, the result can be predicted. Result can be predicted कि result even होगा या odd होगा. Okay? So जो questions हैं, they are based on this concept कि आप एक even number पे and odd number पे, when you are doing arithmetic operations, then what will the result be? Okay? So let's see. For example, if I am saying that the operation is addition. Okay? So if I take an even number and add with an odd number, even plus odd, let's say 2 plus 3, the result is what? 5. Result is always an odd number. Clear? Similarly, if I take odd number plus odd number, 3 plus 5, result will be what? 8. That means result will be even. Okay? Now, if I take even number plus even number, 2 plus 4, result will be what? 6. That means result is an even number. And if I take odd plus even, it doesn't matter, it will be the same only. 3 plus 2, you will get odd number. Basically, you can see that if you have to get an even number, if I say that I am adding two numbers and in result I get an even number, that means the two numbers which I am adding can be both odd also, can be both even also. But if you add even number and odd number, you will not get result even number. Result will always be odd. Understood? This is the first concept. So basically, if I say that if I say that R is odd, P plus Q is equal to R. R is odd. Can you say whether one of P and Q will be even or odd, whether both will be even, both will be odd? See, I know that if I want result odd, if I want result odd number, then I have to take either even odd case or I have to take odd even case. So I know that at least, one among P and Q will be odd. Okay, other one even. This is the first concept. Similarly, for subtraction also, see, if you subtract also even minus odd,
Similarly, the same results are there for subtraction also, addition and subtraction. Okay, even minus odd. Let's say 6 minus 3. 6 minus 3 is even minus odd. Result is 3 odd. Odd minus odd. Result will be even. So if you are taking two odd numbers, result will be even in case of addition also, subtraction also. Even minus even also, result will be even. Okay, and odd minus even also, result will be odd. Okay, so for even, odd, so for addition, subtraction, result remain the same. Now moving on to multiplication. Now moving on to multiplication. Let's say I am multiplying even number with an odd number. Okay. What I want is result will be what? If you multiply x multiply y, you can say result is xy. Okay. Even multiply odd, result will be EO. This will be your result. 2, let's say 2 multiply 9. Result will be what? 18. Obviously, this will be a multiple of 2. That means result will always be even. So multiplication में अगर आपके प्रोडक्ट में एक नंबर भी इवन आ जाता है, then your result will be even. On the other hand, if there is no even number, odd multiply odd multiply odd multiply odd, result will be odd. Okay. So in case of multiplication, अच्छा, even multiply even, even, even multiply odd, odd, odd multiply even, even. Sorry, even multiply odd, even. All of these cases will give you even because एक भी even आ गया अगर तो your result will be even only. यहाँ पे there is no even number, so result is odd in case of multiplication, right? So this was the concept which will be used in the further questions also. Now let's try previous year questions and let's see if we can use this concept. So the first question we have is, let P, Q, R, S be distinct positive integers. P and Q be even, R and S be odd. Okay, P, Q को हम even बोल सकते हैं, R, S क्या है? Odd है. Consider the following statements. P minus R square multiply QS is even. Q minus S square, Q minus S multiply Q square S is even. Then these two, this is odd. There are three statements that are given to you. Now, we know that even multiply any number will give you even only. Okay? So, instead of PRQS, can I write it as odd even equation? P minus R, P क्या है? Even है. R is odd. इसको ऐसे लिख ले, even minus odd square multiply QS. Q क्या है? Even multiply even. S क्या है? Odd multiply odd. Now you see, whatever the product is, I don't care about it. I know that after it, you will multiply it by an even number. देखो, ये e minus odd square and odd को finally तो आप even से multiply करोगे ना? That means your result will be what? Even number. Got it? So, first statement is true. Now moving on to the next one. This is statement 1. Moving on to the second statement. We have, again, see, Q minus S square. Q square S. Tell me whether Q is even or odd. Even? Q is even. When you will take product, ये देखो even से multiply कर रहे हैं हम. Product में even आ गया. That means this is even. 2 is also true. Moving on to the third statement. Q plus R. अब यहाँ पर product is of these two. Q plus R square, P plus S square. Q plus R क्या है? Q is even.
R is odd. Even plus odd square. P plus S. P is even. S is odd. Sorry. P is even. So E here. S is odd. ठीक है. Even plus odd क्या हो गया? Odd. Multiply even plus odd. Odd. ठीक है. Odd square. Odd square is also odd. Odd multiply odd. This means it is odd. So first statement is even. Second statement is even. Third is odd. All three statements are correct. And 1, 2, 3 option D will be my answer. इतना easy सा question था. Nothing hard and fast in it. Very simple concept of number system. Okay. Chalo. Moving on to the next question. What is the number of fives used in numbering a 260 page book? See, ऐसे questions भी ना UPSC does ask, and ये questions are very simple. It's just that you simply cannot remember one formula for it, although there are certain formulas, but it doesn't make sense because ये number कभी भी change हो जाता है. ठीक है? So cramming one formula is not the right way to do it. Simply logically देखो, आप fives use करना चाहते हो book की numbering में. Okay? So one thing is 5 can be used at units place. Units place में we can use 5 till 260. We have to find out how many 5s will you use at units place. Now, firstly, 0, 5 from 1 to 10. 0, 5, 15, 1, 5, 2, 5, so on up to 9, 5 we can do. Right? This is how we can use 5 at the units place. This will also include 55. ठीक है? But we are only counting how many times? 1, 2, 3, 4, 5, so on up to 9. That means 10 times. Okay? We are not counting this. We are not counting this 5. I will tell you why. ठीक है? So only 5 at units place. 0 से लेकर 9 तक कितने 5 यूज हुए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 0 to 9. ठीक है? ये कब हुआ? When we are saying that the number is a 2-digit number. Okay? Similarly, when you will go on to find the same cases for when the number is a 3-digit number. जब यहाँ 1 होगा तब भी same होगा. 105, 115. यहाँ पे तो कुछ भी नहीं था. 15 था, 25 था. Then you have 125, so on up to 195. 10 cases. Okay, this was till 95. Now up to 195, 10 cases are there. After this, when you will have to check for 5s from 195, next 5 will be where? At units place, 205. But ये 295 तक नहीं जाएगा. When will this stop? This will stop at 255. Got it? 255 तक ही रहेगा ये. So how many 5 still here? 6. 0, 1, 2, 3, 4, 5. 0, 1, 2, 3, 4. ऐसे ही होगा ना. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 places पे है तो 6. So when you are talking about units place, 5 कितनी बार है? 10 times here. 10 times here. When you have 0, 2-digit number में. 10 times here, 3-digit number में. And then 6 times here till 255. ठीक है? So at units place, 5 is 26 times. This much is understood, I hope. Now moving on to tens place. Now let us see at tens place. यहाँ पर we know units place में 5 is 26 times. Now at tens place, how many times will 5 be there? Firstly, 50, 50, 51, 52, so on up to 59. Okay, so 10 here.
This much is clear. After that, you will have 150, 150, so on, 151. When you have 1 at the units place, यहाँ तक, ठीक है? So again, from this to 159, 10 fives here. I hope this is also clear. So you get 25 from 10 plus 10, 20 from here. After that also, you have 260 pages in your book. That means after 159, you can further say, so that means after 159, you can further say next 5 will be at where? 250, 251, so on up to 259. So when 5 is at 10th place, here also 10 times you get 5. That means 10 plus 10 plus 10. At 10th place, you get 5 30 times. So in total, 56 times there will be 5 till this page number. Okay? Because obviously 3 digit है, यहाँ पे तो 5 आएगा नहीं. क्यों नहीं आएगा? पेज नंबर ही 260 तक है. ठीक है? So 5 can either be here or here. जब यूनिट्स डिजिट है तो 26 पॉसिबल वैल्यूज, 10th डिजिट में 36, sorry 30. That means in total you will get 56 5. Option B will be your answer. All right. Now let's move on to the next question. See, in this question you have to check कि ये number किससे divisible है. So for this, firstly you will have to check for all of these 4. ठीक है? But इस नंबर को कैसे चेक करें? Even if you know the divisibility, how will you check this number? क्योंकि ये नंबर क्या है? Solved form में नहीं है. So what we will do is we will simplify it. 32 to the power 5 plus 2 to the power 27. Right now this number is not simplified. So by looking at it, I cannot tell कि ये number किससे divisible होगा and किससे नहीं. ठीक है? So what I am trying to do is I am trying to simplify this number. 32 to the power 5. Can I say this is 2 की power 5 and to the power 5 plus 2 to the power 27. This can also be written as 2 to the power 25 plus 2 to the power 27. Now, taking out 2 to the power 25 common, what will be left here? यहाँ से 2 to the power 25 common निकालो तो 1. यहाँ से देखो 27 है, 25 बाहर निकाल लिया, that means 2 square. 2 रह गया. This means 2 to the power 25 multiplied by 1 plus 2 square is what? 4 multiplied by 5. So that means ये number क्या बन गया? 2 to the power 25 multiplied by 5. So ये number किससे divisible है? 2 से भी divisible है, 5 से भी divisible है. This number is divisible by 10. Option C will be your answer. अब देखने में ये question कितना tough लग रहा था, and students were like, which divisibility rule should we apply here? But ऐसे questions को the easiest way is solve the जो आपको statement given है, solve that statement first, so that at least हमें समझ में आए कि जो examiner ने question पूछा है ये statement का मतलब क्या है. Okay? So again, let's move on to the next question. This is also of CSAT 2024. In this question you have, let P and Q be positive integers satisfying P is less than Q. Okay, so P and Q integers है, P जो है वो Q से छोटा है. P plus Q is equal to K. Also ये positive integer है. Positive integer में 0 नहीं आता. Positive integer कौन से होते हैं? 1, 2, 3, 4 and so on. Natural numbers. Okay, so P is less than Q. And also P plus Q is equal to K. What is the smallest value of K
that does not determine P and Q uniquely. For example, if I take now to solve these questions, best option is try using options. Solve using options. ठीक है? So P plus Q is equal to K. Smallest value K की कौन सी ऐसी smallest value होगी so that P and Q uniquely determine हो जाए. This is the question. And if you cannot understand the question, look at the solution. You will understand कि question में पूछा क्या है. K, for example, let me say K is 3. ठीक है? What two numbers should I add so that I get 3? Obviously, from positive integers, you see 1, 2, 3, 4. Only 1 plus 2. This is the case. P को हमने 1 लिया, Q को हमने 2 लिया, because P Q से छोटा है. ठीक है? So if you have K as 3, 1 plus 2, this will be your answer. And that does not determine P and Q uniquely. But यहाँ पर तो हमने determine कर लिया P is equal to 1, Q is equal to 2. I have determined P and Q uniquely. That means ये तो गलत हो गया. 3 में तो कर लिया determine. 3 is not our answer. Now let's check for 4. If I take P plus Q is equal to 4, I know P is less than Q. That means 2, 2, ये तो होगा नहीं, because P should be less than Q. So what other option I have? I have only 1, 3. This option I have. Now also I can say P is equal to 1, Q is equal to 3. Uniquely identified. But question says does not determine P and Q uniquely. So this is also not the right one. Now moving on to, let's consider P plus Q is equal to 5. If I take P plus Q is equal to 5, what all option do I have? I can also write 1, 4. 1 plus 4 is 5. 2 plus 3 is 5. दोनों केसेस ले सकते हैं. दोनों केसेस में P is less than Q. P1 भी हो सकता है, Q4 हो सकता है, P2 हो सकता है, 3 हो सकता है. Now you cannot determine uniquely. So 5 is the smallest value of K so that P and Q do not have unique answers. Option C will be my answer. ठीक है? Again, इसमें कुछ इतना tough नहीं था. It's just that you should understand the question. In this question, trick was understanding what the examiner is asking you to find out. So, अच्छा, what can we deduce from this? Analysis में हम क्या deduce कर सकते हैं इसके? कि sometimes question is easy, statement is difficult or confusing, you can say. ओके, 2-3 चीजें आ गई ना स्टेटमेंट में, ये भी सेटिस्फाई हो, ये भी हो, पॉजिटिव इंटीजर भी हो, देन यूनिकली भी ना पता चले, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ Q होनी चाहिए. ठीक है? क्वेश्चन वाज इजी बट अंडरस्टैंडिंग द स्टेटमेंट इज टफ. इन दैट केस वन थिंग यू कैन डू इज हिंदी वाले सेक्शन में से देख लो सो दैट स्टेटमेंट समझ में आ जाए. अगर हिंदी में आता है तो, नहीं आ रहा है तो टेक इट इन पार्ट्स. फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई सेड दिस पॉजिटिव इंटीजर, तो आई रोट 1, 2, 3 एंड सो ऑन, सो दैट यहां पर मुझे कोई कंफ्यूजन न रहे. P is less than Q, I took this case. P plus Q, K ले लिया. स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ K, दैट इज वाई ऑप्शंस में से हमने 3, 4 ऐसे स्टार्ट किया. डज नॉट डिटरमाइन P and Q यूनिकली, डज नॉट. ठीक है? नहीं करना चाहिए डिटरमाइन. ओके, ऑल राइट. नाउ let's move on to the next question of CSAT 2024. In this, there are 3 distinct prime numbers. That means you have to use the property of prime numbers, and further you have to check, and the question is a question and statement. So this is the type of question in which you have to check out for the options also. Question can be answered using one of the statements alone, cannot be answered by using other statement. फर्स्ट स्टेटमेंट का मतलब है कि आप ये 2 स्टेटमेंट में से कोई भी एक स्टेटमेंट यूज करके आंसर कर सकते हो, बट दूसरे स्टेटमेंट से आंसर नहीं आएगा.
Second statement means question can be answered using either statement alone. Both the statements alone you use and you can get the answer whether you use statement 1 or you use statement 2. Similarly, C is saying can be answered by using both together. दोनों को इकट्ठे statements को use करोगे then only you can answer. And fourth statement states that question cannot be answered. ठीक है, by even by using both together. अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है. There are three distinct prime numbers whose sum is a prime numbers. So I can say P1, P2, P3. From the first information that is given to me, I can say P1, P2, P3 ये prime numbers है जिनका sum है further एक prime number. ठीक है. Then statement 1 says their sum is less than 23. चलो, firstly, let's solve this question using statement 1. If I have P1, P2, P3, sum is a prime number. सबसे पहले let's make a list of all the prime numbers 2, 3, 5, 7 and 11, 13, 19 and so on, right? I know that sum should be less than 23. Okay, so less than 23 means sum can be what? Sum can be 19, sum can be 13, sum can be 11 also. Oh, 17 is missing. Sum can be 17 also. 19, 17, 13, 11. All of this can be the sum. इससे छोटा हो सकता है. What is the smallest sum that you can get? Smallest sum is 2 plus 3 plus 5, 10. So that means जो भी sum होगा, it will only be these four numbers. First of all, this much is clear. Now, you see, what three numbers should I use to get this result? Can I use, firstly, if you have P1, P2, P3, आप इसमें से किसी को भी 2 मान लो, ठीक है? ये जो होंगे P2 and P3, they are primes except 2. That means they will be odd numbers. ठीक है? Odd numbers होंगे, that means odd plus odd क्या होगा? Even. 2 भी है, 2 plus even result will be even. That means result ये तो नहीं आएगा. ठीक है? इसका मतलब हम 2 को कंसिडर नहीं कर सकते. We cannot say that P1, P2, P3 में से कोई भी एक नंबर is 2. ठीक है? Now let's start with the other smallest option. I take 3 and 5. Firstly, if I take 3, 5, 7, ठीक है, तो क्या आएगा? 3, 5, 7, 12 plus 3, 15, not a prime. Similarly, you can also say, let's say P1 is 3, P2 is 5. What should I put here so that I get 19? 3 plus 5, 8. 19 इधर है, that means 11. Okay, this is one case that we get. So 3, 5, 11 will give you 19. This is one case that we get. Let's see whether we can get further more cases. Instead of 3, 5, 11, for 19, let's say if I have 3, 7. 3 plus 7, 10. 10 and here it should be then 9, which is not possible because prime number होना चाहिए. ठीक है? Let's consider 3, 11. 3, 11 is what? 14. अच्छा, again 3, 5, 11 that is considered. If you consider 3, 13, then how will you get 19? 3 plus 13, 16. You should have 3, but distinct primes should be there. That means this is also not possible. So for 19, only one case is possible, 3, 5 and 11. Now let's see whether any sum can give us 17. ठीक है? Let's check for 17 also. Again, let's take 3 and 5 only. If you have 3 plus 5, that means 8. So that means you need 9 here. Not possible. If you have 3 and 7,
that means 10. You need 7 here, again not possible because of repetition. If you have 3 and 11, that means 13. 14, that means you need 3 here, again not possible because repeat नहीं कर सकते आप numbers को, ठीक है. If you take 3 and 13, this is what, 16, then 1 is not possible, 1 is not a prime number. So अच्छा, apart from 3s, if you take 5 and 7, अभी हमने 3 के cases देखे, 5 and 7 ले तो 5 and 7 12, you have to add 5 to it, not possible. Another number 5 11 16, that means above it तो possible ही नहीं है. 16 plus 1, 5 plus 13 करोगे तो 17 से ज्यादा हो जाएगा. Consider any other case. 7 plus 11, for 7, if you take 7 11, then what, 18, again not possible, number ही बड़ा हो गया. So you are not getting 17 in any case. Now if you have, let's say 30, you want 30, ठीक है. So we will again start with what, 3 5, smallest case. 3 and 5 is what, 8. 8 में क्या ऐड करें कि 13 आ जाए, 5. Is it possible? Not possible. अच्छा, इससे बड़ा आप कोई भी नंबर कंसिडर करोगे, लेट्स से 3 and 7. 3 and 7 क्या हुआ, 10. तो यहाँ पर एक छोटा नंबर ऐड करना पड़ेगा, स्मॉलर देन 5. 10 plus 3, not possible. Then you have consider 3 11, 13 ही नहीं आएगा. Only these two cases were there for 13. That is also not possible. 5 and 7 if you will take 12, but then you cannot add 1 to it. 1 prime नहीं होता. So 13 के लिए भी no case possible. Now you check for next one, that is 11. For 11, 3 5 smallest numbers, 8, 3 and 5. For this you need 3, not possible. ठीक है. Again if you take any other number, 3 and 7, 10. For this you need 1, not possible. Above it, इससे बड़े numbers लोगे तो sum 11 नहीं बन पाएगा, ठीक है. So 11 के लिए भी कोई case possible नहीं हुआ. That means only case possible is 3 5 11, and which means 3 5 11 will give you 90. So from statement 1, I can solve my question. ठीक है. Now I need to see whether I can solve the question using statement 2 also. Statement 2 कह रही है one of the numbers is 5, but sum less than 23 नहीं बोला. This is the catch here. Sum less than 23 is not said. That means what I want is prime plus prime, P1, P2 plus another prime. Let's say this is 5 because statement 2 में क्या बोला है, one of the numbers is prime. This should give you prime number. अब ऐसे तो there are many cases possible. For example, if you take, let's see if any other case is possible or not. Below 23 तो we have seen that we could not find a case. ठीक है. Let's say if you take this as 23. So P1 plus P2 plus 5 should be equal to 23. ठीक है. That means 1 prime plus next prime should be equal to what, 18. Check, if you put 7 here and 11 here, 7 plus 11 plus 5, will you get 23? 12 11 23 आ जाएगा ना, right? So ऐसे तो you can get multiple cases. If the only condition is कि एक number prime होना चाहिए, you can get multiple cases. अभी एक case तो we did find out, 3 11 and 5, right? यही case था ना, 3 11 and 5 वाला, ठीक है. So first from statement 2 you get multiple cases possible. Statement 2 से आपके question solve नहीं कर सकते, but statement 1 से yes you can solve. So question can be answered by using one of the statements alone, but cannot be answered by using other statement alone. Option A will be your answer. All right, let's move on to the next question.
ओके, देखो जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं हमारे पास, इज x प्लस वाई एन इंटीजर, स्टेटमेंट गिवन है 2x प्लस वाई इज एन इंटीजर, x प्लस 2y इज एन इंटीजर, ठीक है। फर्स्टली अगर 2x प्लस वाई एक इंटीजर है, कैन यू से वेदर x प्लस वाई इज एन इंटीजर और नॉट। लेट्स से x 1 है y 2 है, ठीक है। तो देखो 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 4 इंटीजर आया एंड एक्स वाई इंटीजर्स थे। बट व्हाट इफ x क्या है 1/2 एंड y 2 है, x को 1/2 पुट करो, 2 मल्टीप्लाई 1/2 प्लस 2, 2 मल्टीप्लाई 1/2 कितना हुआ 1, 1 प्लस 2 3, x प्लस वाई फिर भी इंटीजर आया बट x एंड y इंटीजर नहीं थे। सो फ्रॉम वन स्टेटमेंट यू कैन नॉट टेल, ये भी सिमिलर है। सो स्टेटमेंट 1 से तो आप नहीं बता सकते अलोन, स्टेटमेंट 2 अलोन से भी यू कैन नॉट टेल। नाउ लेट अस ट्राई यूजिंग बोथ ऑफ द स्टेटमेंट्स। लेट्स से 2x plus y is an integer, x plus 2y is an integer, ठीक है। मैंने कंसिडर कर लिया 2x plus y is equal to 4, x plus y is equal to 4. What I want to check is क्या हर कंडीशन में x plus y एक इंटीजर आएगा या नहीं, ठीक है। दिस आई वॉन्ट टू चेक। 2x plus y is equal to 4, x plus 2y is equal to 4, 3x plus 3y is equal to 4, ठीक है। x plus y is equal to 4/3। अब ये देखो x plus y is not an integer, not an integer, ठीक है। 2x plus y एक इंटीजर था, x plus 2y भी एक इंटीजर था, बट x plus y not an integer, ठीक है। सो बट इज इट ट्रू कि हर केस में x plus y will not be an integer? यहां तक वी सेड कि x plus y अगर एक ये 2x plus y अगर ये इंटीजर है, स्टेटमेंट 1 एंड 2 मिलाकर वी सेड कि नो x plus y is not an integer. So is x plus y an integer? No. I can answer it, ठीक है। बट क्या हर केस में it is not an integer? For this I will have to check again. So let us say 2x plus y, अच्छा अगर ये केस ले लें 2x plus y is equal to 3, x plus 2y is equal to 3. Now you check 3x plus y is equal to what? 6. X plus y is equal to 2. Here x 2x plus y is an integer, yes. X plus 2y is an integer, yes. X plus y is an integer, yes. पहले केस से आंसर क्या आ रहा था? नो। तब तो x प्लस वाई इंटीजर नहीं था। अब इस केस से आंसर आ रहा है x प्लस वाई है इंटीजर। दैट मीन्स डेफिनेटली यू कैन नॉट टेल, कुछ केसेस में इंटीजर होगा, कुछ केसेस में इंटीजर नहीं होगा, ठीक है। सो क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड, ऑप्शन डी, क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड by using both the statements. Now let's move on to the next question of 2023. अच्छा अगेन ये वही इवन ऑड का कंसेप्ट आ गया। 2024 में we have done the same concept, 2023 में see same question is asked. So in 2023 you have 3 of 5 positive integers p, q, r, s, t are even, 3 even, 2 odd, but you do not know कौन से even है कौन से odd है, ठीक है। So 2 of them are odd, not necessarily in the order. Consider the following. First statement क्या है? P, Q, R, S, T is definitely even. Now you think one thing, if I have P plus Q, ठीक है, अगर ये even है
P माइनस Q क्या होगा? ये भी इवन ही होगा. We said that if you have two numbers even, whether you take minus or you take plus, result will be even. If you have two numbers odd, whether you take minus or you take plus, result will be even. If you have two numbers, one is even, other is odd, plus लो minus लो, result will be odd only. ठीक है. So result same है, चाहे आप माइनस का साइन यूज कर रहे हो, चाहे आप प्लस का साइन यूज कर रहे हो. ठीक है. रिजल्ट इज द सेम. So if I am saying P plus Q is even, that means P minus Q will also be even. P plus Q is even, that means दोनों even होंगे या दोनों odd होंगे. दोनों even का सम भी even होता है और डिफरेंस ले लो तब भी even होता है. ठीक है. So इस स्टेटमेंट में whatever the sign is in between, it does not matter. ठीक है. ये मैटर नहीं करता. Now you know two of them are odd. Any two are odd. The rest three of the five are even. ऐसे लिखना है इसको. Any two odd numbers, एडिशन कर लो या सब्ट्रैक्शन कर लो. I am not saying कि P odd है Q odd है. No. कोई भी दो odd है, हो सकता है ये एडिशन हो रहे हैं, हो सकता है ये सब्ट्रैक्शन हो रहे हैं, बिकॉज साइन दोनों है यहाँ पे. ठीक है. सो एनी टू ऑड, चाहे आप ऐड करो चाहे आप सब्ट्रैक्ट करो, you will get even number. And then these three, even will always give you even number. ठीक है. 2, 4, 6 कुछ भी लगा लो, प्लस माइनस माइनस प्लस 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 माइनस माइनस, ऑलवेज इट विल गिव यू इवन ओनली. ठीक है. इवन प्लस इवन इज इवन, इवन माइनस इवन इज इवन. ठीक है. सो दिस मीन्स दिस रिजल्ट विल ऑल्सो गिव यू इवन. ऑड प्लस ऑड या ऑड माइनस ऑड, दिस विल ऑल्सो गिव यू इवन. इवन प्लस इवन या इवन माइनस इवन, कुछ भी साइन हो, इवन. So result is definitely even. Yes, statement 1 is true. Okay. Now you want to see the second statement. 2P plus Q plus 2R minus 2S plus T. इसमें statement है result is definitely odd. When you have a statement like this, definitely odd, तो अगर हम एक भी केस ऐसा फाइंड कर दे जो इसको कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, that means I can say no, statement is wrong. ठीक है. So what I will try to do is I will try to make this statement even. अब मुझे पता है among P, Q, R, S, T, two numbers are odd. ठीक है. दोनों odd को if I multiply by 2, ठीक है, even हो जाएंगे. So I am assuming, let us assume P is odd, R is odd. I have assumed this. ठीक है. If I take odd, 2P, 2 multiply odd, even. Q is even only. ठीक है. 2R, 2 multiply odd, even. 2 multiply odd, 2 multiply 3, 2 multiply 5. All of this will give me even numbers, ना? So R is odd, 2 multiply odd, even. 2S तो even है, T भी even है. All even numbers, result will be even. So second statement क्या बोल रही है? This is definitely odd. No. In this case, result will be even. So second statement is wrong. First only will be your answer. ठीक है. So again, these questions, even odd की property वाले questions have been asked recently in your examination. So do not forget to do this topic. Now in 2023, similar question has been asked again. P plus C. Consider the following in respect of prime and composite. P plus C, P minus C can be even. You want one prime, one composite. ठीक है. So let's take prime number. If you take prime number 11, composite number 9. Now you see 11 plus 9. P minus C. 11 minus 9. 11 plus 9, 20. 11 minus 9, 2.
10 even. फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू, दिस कैन बी इवन. ठीक है, कैन बी मतलब सिर्फ एक केस बताना है जिसमें ये हो सकता है. ठीक है, नेक्स्ट इज 2p प्लस सी कैन बी ऑड. ठीक है, 2p प्लस सी ऑड चाहिए. अब देखो फिर से इवन ऑड वाली चीज, ये क्या है, इवन हो गया ना. 2 को आप किसी भी प्राइम से मल्टीप्लाई करोगे इवन हो जाएगा. इवन में क्या ऑड करें कि ऑड आ जाए, कोई भी ऑड नंबर. सो दैट मीन्स कोई भी प्राइम ले लो आप. लेट्स से p इज इक्वल टू 3, कॉम्पोजिट कोई भी ऑड नंबर, कॉम्पोजिट ऑड 15, कॉम्पोजिट भी है ऑड भी है. ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 3 6, ऑड कॉम्पोजिट नंबर 15. व्हाट विल दिस गिव यू, 6 प्लस 15 21, ऑड. 2p प्लस c कैन बी ऑड. अब ये देखो, p मल्टीप्लाई c कैन बी ऑड. दो नंबर की मल्टीप्लीकेशन ऑड क्या होगी, इफ बोथ ऑफ देम आर ऑड. सो कोई भी ऑड प्राइम ले लो 5, कोई भी ऑड कॉम्पोजिट नंबर ले लो 15, 9, एनी ऑड कॉम्पोजिट नंबर 5 मल्टीप्लाई 9, you will get odd. So p multiply c can be odd also. 1 2 3 option D will be my answer for this question. इतना सिंपल क्वेश्चन है CSAT 2023 का, एंड एवरीबडी से CSAT 2023 वाज सो टफ सो टफ. ऐसा कुछ नहीं है, वेरी सिंपल क्वेश्चन इफ यू नो द कंसेप्ट ऑफ इवन ऑड एंड प्राइम्स. चलो, अच्छा ये भी अगेन अनदर क्वेश्चन जिसमें आपको सॉल्व भी नहीं करना है. विच नंबर अमंग्स द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट. सबसे पहले 2 की पावर 40, 3 टू द पावर 21, ये तो सॉल्व है. 4 टू द पावर 18, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. 4 टू द पावर 18, इसको लिख ले 2 स्क्वायर 18, इसको लिख ले 2 टू द पावर 36. ठीक है, 8 टू द पावर 12, लेट्स सॉल्व दिस. 2 क्यूब 12, 2 टू द पावर 36. स्मॉलेस्ट बताना है. ऑप्शन क्या है, 2 टू द पावर 40, 3 टू द पावर 21, 2 टू द पावर 36, 2 टू द पावर 36. 2 टू द पावर 40 तो कैंसिल हो गया बिकॉज 2 की पावर 36 छोटी पावर वाला है, तो ऑब्वियसली ये स्मॉलेस्ट नहीं होगा. अब ये देखो, दो आंसर तो नहीं हो सकते, दीज टू आर इक्वल है ना, दो आंसर तो नहीं हो सकते. व्हाट विल यू से, अगर मैं बोलूं 2 की पावर 36 बड़ा है किससे, 2 की पावर 36 से बड़ा कैसे हो सकता है, ये तो इक्वल है. दो आंसर आप कर नहीं सकते. दैट मीन्स ओनली 3 टू द पावर 21, दिस इज योर आंसर. इतना सिंपल. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर. जैसे पहले किया था बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है. क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंसिडर द क्वेश्चन एंड टू स्टेटमेंट्स गिवन बिलो. इज x एन इंटीजर. क्वेश्चन में पूछा गया इज x एन इंटीजर. x इंटीजर है या नहीं इतना बता दो. पहली स्टेटमेंट क्या है, x/3 इज नॉट एन इंटीजर. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे कि क्या x हर केस में इंटीजर होगा या नहीं होगा. अगर मैं x को 5 ले लूं तो x इंटीजर है, x/3 5/3 not an integer. So you can say x/3 is not an integer, x is integer. So is x an integer? Yes. At the same time x को अगर 5/2 ले लें, 5/2, x/3 क्या होगा, 5/2 divided by 3 means this, 5/6, not an integer. अब देखो x/3 नॉट एन इंटीजर बट x भी नॉट एन इंटीजर, तो यहां से आंसर क्या आया, नो. ओके, सो स्टेटमेंट 1 से आ रहा है कि x इज एन, स्टेटमेंट 1 से यू कैन नॉट टेल डेफिनेटली. ठीक है, स्टेटमेंट 1 से तो यू कैन नॉट टेल. अच्छा सेम ये केस देखो, फॉर एग्जाम्पल इफ यू टेक 3x,
यूजिंग स्टेटमेंट 2 यू चेक 3x इज एन इंटीजर, 3x एक इंटीजर है, दैट मीन्स अगर मैं x की वैल्यू लूं 5/3, 3x इंटीजर है, ट्रू। एट द सेम टाइम x की वैल्यू 5 ले लूं, 3x तब भी इंटीजर है। सो x इंटीजर ना हो या इंटीजर हो, 3x इंटीजर आ रहा है, दैट मीन्स इससे भी यू कैन नॉट टेल डेफिनेटली, राइट। नाउ लेट अस क्लब बोथ ऑफ दीज, लेट अस क्लब बोथ ऑफ दीज, दोनों स्टेटमेंट्स टुगेदर यूज करके ट्राई टू फाइंड। यू टेक x एज 6, ठीक है। स्टेटमेंट 1 से x/3, अच्छा x एज 5, take x as 5, x/3 is not an integer, 5/3 आ रहा है, so obviously x/3 is not an integer, 3x is an integer, 5 multiply 3 15 is an integer and x जो है ये भी एक इंटीजर है, ठीक है। x को लो 5/3, x/3 not an integer, x डिवाइड बाय 3 5/9 आ जाएगा ना, नॉट एन इंटीजर, तो ये स्टेटमेंट, हाँ स्टेटमेंट 1 इज सेटिस्फाइड। 3x इज एन इंटीजर, 3 मल्टीप्लाई 5/3 5, 3x इज एन इंटीजर। देखो अगेन इन दोनों स्टेटमेंट से टुगेदर ऑल्सो यू कैन नॉट कंक्लूड कि x इंटीजर ही होना चाहिए, तब भी आई कैन फाइंड कॉन्ट्राडिक्शन। अगर आप बोलो x इंटीजर है तो आई विल से कंसिडर दिस केस नहीं है इंटीजर, आप बोले x इंटीजर नहीं है, आई विल से कंसिडर दिस केस इंटीजर है, ठीक है। सो एक डेफिनेट आंसर वी कैन नॉट गेट, दैट मीन्स both statements are not sufficient to answer the question. Next question is this one, okay. इस क्वेश्चन में क्या है, on one side of a 1.01 kilometer long road 101 plants are planted at equal distance from each other, ठीक है। what is the total distance between 5 consecutive plants? ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, इसमें थोड़ी सी कॉमन सेंस चाहिए। अगर मैं बोल रही हूं 3 plants are planted, ठीक है, at equal distance, that means you will say plant 1, plant 2, plant 3. So अगर ये डिस्टेंस है 100 किलोमीटर, you will say this distance is what, 50. 3 plants है, बट आप उसको कितने डिस्टेंस में डिवाइड कर रहे हो, डिस्टेंस ऑफ 2, 100/2, ठीक है। Similarly, if I say 4 plants are planted, plant 1, 2, 3, 4, ठीक है। Let's say distance is what? Distance is 150 किलोमीटर, 120 ले लो, 120 किलोमीटर। अब ये 120 किलोमीटर डिस्टेंस आप कितने पार्ट्स में डिवाइड करोगे, 1, 2, 3, सो 40, 40, 40। जब 3 प्लांट्स थे तो 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ डिस्टेंस, 4 प्लांट्स हैं तो 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ। अब कितने प्लांट्स हैं, 101 प्लांट्स, डिस्टेंस कितना है 1.01 किलोमीटर, दैट मीन्स 1010 मीटर। इतना डिस्टेंस आप 101 प्लांट्स है ना, तो 101 माइनस 1 100 पार्ट्स में डिवाइड करोगे, इतना डिस्टेंस होगा बिटवीन ईच प्लांट। देखो अब, which basically means 1010 मीटर डिवाइडेड बाय व्हाट, 100 प्लांट्स है, 100 प्लांट्स है तो डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ यहाँ कितने डिस्टेंसेस होंगे, 101 प्लांट्स है तो 100 डिस्टेंसेस, so 1010 divided by 100, that means for one distance between one plant will be, एक प्लांट से P1 से P2 का डिस्टेंस होगा 10.1 मीटर, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, डिस्टेंस बिटवीन 5 कंसेक्यूटिव प्लांट्स। फिर से कॉमन सेंस नहीं छोड़ के आनी है घर पे,
5 कंसेक्यूटिव प्लांट्स के बीच का डिस्टेंस, दैट मीन्स कितने डिस्टेंसेस फाइंड आउट करने हैं, P1 से P5 तक, बीच में P3, P2, P4, डिस्टेंसेस कितने हुए, 1 2 3 4, वन डिस्टेंस इज 10.1, तो कितने डिस्टेंस फाइंड आउट करने हैं, 4, 10.1 मल्टीप्लाई 4, 40.4 will be your answer. There was nothing tough in this question. It's just that you had to find out कि 101 plants है तो वो parts कितने बनेंगे, 100 parts बनेंगे. Further 5 plants हैं, 5 plants के बीच का distance find out करना है. That means 4 parts का distance find out करना. So that was the trick in this question. Now consider the following statements in respect of two natural numbers P and Q such that P is a prime number and Q is a composite number. अगेन बिल्कुल देखो, अगर किसी ने पहले वो ये वाला क्वेश्चन किया होता तो वो 23 वाला क्वेश्चन गलत ना होता. P एक प्राइम है, Q एक कॉम्पोजिट है. P मल्टीप्लाई Q कैन बी ऑड, पहले ही देखा था. ऑड कब होंगे, जब दोनों ऑड होंगे. ऑड प्राइम ले लो कोई भी 5, ऑड कॉम्पोजिट ले लो 9, ऑड आ गया. कैन बी एन ऑड नंबर, यस इट कैन बी एन ऑड नंबर. Q डिवाइड बाई P कैन बी प्राइम, हाँ. Q एक कॉम्पोजिट नंबर है, 10 ले लो. P एक प्राइम नंबर है, 2 ले लो. Q डिवाइड बाई P 10 बाई 2, 5 प्राइम, can be prime, yes. P plus Q can be prime. ये तो there are multiple cases possible. 2 plus 9 11 can be prime. ठीक है. So all the statements are correct. चलो next question देखते हैं. What is the largest number among the following? फ्रैक्शंस की कंपैरिजन का क्वेश्चन है. सो इसमें यू शुड नो कि फ्रैक्शन की पावर में माइनस है, दैट मीन्स आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या करो, रेसिप्रोकल करो. सो 1/2 विल बिकम 2 to the power 6, माइनस चला जाएगा क्योंकि हमने रेसिप्रोकेट कर दिया. 4 क्यूब, 3 to the power 4, 6 to the power 2. ठीक है, इतना क्लियर है. आफ्टर दिस यू कैन सॉल्व. 2 to the power 6 क्या हुआ, 2 to the power 5 32, to the power 6 64, 4 cube again 64, 3 to the power 4 81, 6 square is what, 36. So which is the largest number, this one. ठीक है, option C. Now you have next question, recurring decimal representation. देखो recurring decimal वाले questions को कैसे करते हैं. There is only this one question asked in the recent years. So ये वाला question एक देख लो, आप इसको x consider कर लो, 1.27 27 27 and so on. ठीक है. अब ये दो spaces का difference है, 27 number is of 2 digit. So what I will do is I will multiply it by 100. I will get 127.27 27 27 and so on till infinity. अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना, subtracting these two, 100x minus x 99x will be equal to what? डेसिमल के आगे क्या है, डेसिमल के पीछे जितने भी 2727 है आपस में माइनस हो जाएंगे. What will you be left with? 127 minus 1 126, which will become what? X is equal to 126 by 99. इसको सॉल्व करो, 14 by 11. ऑप्शन बी, दिस विल बी योर आंसर. ठीक है, सिंपली कट इट बाय 9. ओके, क्लियर है. चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. कंसिडर द टू स्टेटमेंट्स S1 and S2 फॉलोड बाय अ क्वेश्चन. S1 क्या बोल रहा है, P and Q are both prime numbers. S2 says P plus Q is odd. ठीक है, odd integer. Is PQ an odd integer? P multiply Q. PQ कब odd होगा? If P is odd, Q is odd.
In that case, PQ will be odd. Now you see this PQ is odd वाला concept 2022 में भी था, 23 में भी था, 2019 में भी same exact same चीज. Is PQ an odd integer? PQ will be odd if both P and Q are odd. Statement 1 से देखते हैं. P and Q are both prime numbers. But what if P is 2 and this is 5? Prime number तो even भी होते हैं ना, 2 is the even prime number. So इसमें तो you cannot tell if P and Q and odd because 2 5 लोगे तो odd आएगा, 2 5 लोगे तो even आएगा and 3 5 लोगे तो odd आ जाएगा. So I cannot tell whether PQ is odd or not. Consider statement 2. You want P, Q, you want odd. P plus Q is odd. See, a P plus Q odd हो, that means ये क्या होगा, या तो P even होगा या Q odd होगा. ठीक है, दोनों even होंगे तब तो even आएगा. Both are even, then you will get even. If both are odd, odd plus odd is also even. So this is also not possible. That means even odd or odd even. यही केस पॉसिबल है. अगर आप P मल्टीप्लाई Q करोगे, you will get even in both the cases. So is P and Q an odd and P multiply Q an odd integer? Using statement 2, you can say that no, it is not an odd integer. That means statement 2 alone is sufficient to answer the question. However, statement 1 के through आप answer नहीं कर सकते. Okay? So this was your even odd question. This was a question based on the concept of even odd. ठीक है? And with this, we are also done with the miscellaneous questions of number system. So this was your 4th session of number system, I guess. And then we will move on to percentages in the next session. Thank you so much for watching the video.